टूर फाइनली एंड हो चुका है एंड मैं बोलूँगा कि एक मस्ट विज़िट है, करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अब मैं आपको टूर एक्चुअली में एक्सप्लेन करता हूँ एंड यहाँ की जो हिस्ट्री है वो आपको बताता हूँ, नरेट करते हुए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एंड यहाँ से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ अब मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ तो आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँगा। के वीडियो में हम वियतनाम की हो ची मिन सिटी से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोची डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। कोची डिस्ट्रिक्ट में कोची टनल्स तकरीबन 250 किलोमीटर लंबा फैला हुआ एक टनल्स का नेटवर्क है। ओरिजिनली 1940 में बनाया गया ये टनल नेटवर्क फ्रेंच फोर्सेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध से पहले वियतनाम फ्रांस के अंडर था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 के बीच जापान ने वियतनाम को ऑक्यूपाई किया, जिसके वजह से फ्रेंच रूल एंड हुआ और इसने इंडिपेंडेंस की मूवमेंट स्टार्ट की। वियतनाम 1945 में जापान की दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ हो ची मिन। 1946 से 1954 के बीच फ्रांस दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद वापस वियतनाम आया। एक लंबी लड़ाई चली जिसे फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के नाम से जाना जाता है। दाइन बाइन फू में फ्रांस के हार के बाद वियतनाम फाइनली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ। 1954 में जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ, जिसने वियतनाम को 17 पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में डिवाइड किया। यूएसए ने साउथ वियतनाम को बैक किया एंड यूएसएसआर ने नॉर्थ वियतनाम को बैक किया, जिसके वजह से एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई। 1960 से 1975 के बीच एक बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लाई चेन स्टार्ट हुई, जिसे हो ची मिन ट्रेल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम में लड़ रहे अपने फोर्सेस के सपोर्ट के लिए लाओस और कंबोडिया के रास्ते इस इनविजिबल ट्रेल को क्रिएट किया। इसका नाम हो ची मिन ट्रेल था। इस लड़ाई में वियत कॉन्ग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। वियत कॉन्ग कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप्स थे जिन्होंने साउथ वियतनाम में यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ वियतनाम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये लड़ाई 1950 से 1970 के बीच लड़ी। उनका मेन गोल वियतनाम के रीयूनिफिकेशन का था। 1965 से 1963 के बीच यूएसए ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को एस्केलेट किया ताकि कम्युनिज्म स्प्रेड ना हो सके इस रीजन में। इसी दौरान 1961 से 1971 के बीच इस युद्ध में टॉक्सिक केमिकल्स का भी इस्तेमाल हुआ। इन केमिकल्स के यूसेज से लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जैसे कैंसर देखने को मिले। इस लड़ाई के दौरान कोची टनल एक की बेस हुआ करता था वियत कॉन्ग के लिए। उनके अंडरग्राउंड ऑपरेशंस, लोगों की पढ़ाई लिखाई, उनका रहना, खाना पीना, इन शॉर्ट सब कुछ इन टनल्स के अंदर हुआ करता था। एक टाइम पे ये टनल्स 3 लेयर्स में हुआ करती थी। 1968 में टेट ऑफेंसिव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर मोमेंटम को शिफ्ट करने वाला इवेंट हुआ। वियत कॉन्ग्स ने टनल को इस्तेमाल करके सरप्राइज अटैक किए। 1955 से 1975 के बीच कोची टनल्स एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे वॉर में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए। इस युद्ध के दौरान टेक्नोलॉजी में अमेरिका काफ़ी आगे था एंड साउथ वियतनाम को प्रोवाइड किए जाने वाले टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के सामने नॉर्थ वियतनाम कहीं टिक नहीं पाता। इसलिए उन्होंने सरप्राइज अटैक्स और बूबी ट्रैप्स यूज़ किए ताकि वो इस लड़ाई में बने रहें। 1975 में नॉर्थ वियतनाम की जीत हुई और रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम हुआ। इस इवेंट को फॉल ऑफ साइगॉन के नाम से जाना जाता है। इस इवेंट के एक सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक वो तस्वीर है जब नॉर्थ वियतनाम का एक टैंक इंडिपेंडेंस पैलेस के अंदर वॉल को
ब्रेक करके एंटर होता है। पोस्ट वियतनाम वॉर काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिले एजेंट ऑरेंज के वजह से। 1976 में वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक बना विथ कूची बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। आज ये टनल एक हिस्टोरिकल साइट है, अट्रैक्टिंग टूरिस्ट टू लर्न मोर अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉर एंड द रेजिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ वियतनाम। Have you seen this? Down there. Fine. Make out from back. So grab it. right here. You see it? Right here. This is our tunnels right here. So not every secret entrance have a door like that. Some of it is wide open. But okay, so do you know what is this right here? Sorry, what it look like? Tree. We have hundreds of termite mound in our jungles. So we do know air vent. So at the deepest level of our tunnels, we have an air vent. So maybe later, when you go around, you see some termite mound like that. Some termite mound like that. You're gonna see a hole. That is our air vent right there. To keep the shape of the hole before we fill it up, before we build up, we're gonna put into it an empty bamboo trunk to prevent any soil drop in, prevent any water to drop in and block the air hole. And so, because we have a lot of termite mound like that, we disguise our air vent to trick the US. Because you know when they come here, if they see, oh, this one's just a termite mound, they're gonna skip it. So when they know about some of the termite mound is our air vent, first thing they do, like I said, they're gonna pump in the water. They see a hole, pump in the water. But you know, most of the waters being absorbed by the soil. And so the left of the waters flow back to the river. Next thing that they use to find out our air vent like this is they use the German Shepherd. They use dog to know which one is the real one. Because you know when they come here and when they try to destroy our air vent, if they see any termite mound, they destroy it. But when they destroy it, the termites come out. Why? It's because if our soldiers, Viet Cong soldiers, guerrillas, if we see any termite mound, we're gonna make a hole, just like an air vent, to trick them. So if they want to destroy it, they're gonna use a hand grenade, throw it to the termite mound. The grenade explodes, the termites come out. They waste their artillery, they waste their grenade. Here, an M41. Back in the Vietnam War, they used two common tanks, M41, M48. So the number 41, 48 that this tank will make. This tank will make in 1941, which is in the World War II. And they used this tank in the Vietnam War, which started in 1955. More than 10 years after that. This tank right here, they use in the tank and the bulldozer strategy in the 7-4 operation. Bulldozers coming first, cut down all the tree, shovel all the soil, clear the path for the tank to come in. So that is why we have a tank lying in the middle of the jungles right here. But this tank right here, have going through one of our
landmines. It's called a delay mine. And you can see this tank right here. This tank have go through a delay mine in 1970. And when you see it, you see the tank go through the delay mine. If you push on it, 3 seconds later, it will explode. And you see this tank right here. Push on it. 1 second, 2 seconds, 3 seconds. The back of the tank explode. Let's come and see. जो आप सामने देख पा रहे हैं, इस तरह के बूबी ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जाता था वियत कॉन्ग और उन दिनों नॉर्थ वियतनाम की फोर्सेस के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका से इस युद्ध में टेक्नोलॉजी के मामले में नॉर्थ वियतनाम काफ़ी पीछे था, तो उन्होंने इस तरीके के टेक्निक्स इस्तेमाल किए इस लड़ाई में अपने आप को बनाए रखने के लिए। बूबी ट्रैप्स के अलावा सरप्राइज़ अटैक्स भी किए गए। इन सरप्राइज़ अटैक्स में कूची टनल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। This one falling treasure, and you can call it an alligator mouth. When you fall down the mouth, this one is a fish trap. This is the simplest, the easiest that we could do. We follow the memo, get in, but could not get out. Because you can see right there in the center of the trap, we have a spike, and when you fall down, your feet will penetrate. And if you try to get out, you cannot, because when you put your feet out, this trap, this spike right here, is gonna hold you one more time. And because that we call this thing fish trap because we designed the spike just like a fish. So if you try to get out, you're gonna lose a piece of flesh. So for this room right here, this bunker right here, we call it military workshop. This is where we prepare our weapon before we go to the battlefield. So right here, what they doing is they trying to recycle everything that they can collect from the jungle. And if you look at your right here, at the front right, you will see a bunch of bomb shrapnel, bunch of bomb shells. So for the small piece of bomb shrapnel, we're gonna recycle into the spike that we use in our trap. So for the big piece of bomb shell, we're gonna recycle into the shape of the delay mine. It's have a round shape on the table right there. So now let's go down and have a look. तो मेरे सामने इनका एक शूटिंग रेंज है, पीछे ये, वहाँ पे आप शूट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारे, अलग अलग गन्स में से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। AK-47 है यहाँ पे, K63 है, M16 है, और भी बहुत सारे गन्स हैं। 60,000 वियतनामीज़ डोंग का एक बुलेट है, एंड मिनिमम आपको 10 ट्राई करना होगा। एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हो। Okay, right here. Back in the war, what we wear for our feet, we don't have any Nike, we don't have any Adidas, we don't have any shoes. This is what we wear right here, rubber sandals. And we recycle this from car tire. You see, make use of everything. And right there we have a lot of size for you to choose, from a baby size to Michael Jordan size, I think. So for this one, I want you to have a look. Do you see any difference between this? Yeah, like double-sided. Yes? Double-sided. Double-sided, this one. Okay, anything else? Yeah, one's like more curved than the More other. curved. One's flatter. I guess you haven't seen this. So, yes? The other way around. All the way around. That is what I want you to see. A lot of you cannot see this. So, we have two straps right here. They're parallel line and across.
So when we put our feet, when we wear this, we put our feet in the parallel lines. It's gonna look like this. This one, other way around. We call this one backward sandal. In the hot season, we're gonna wear this. This normal one right here. But when it's in the rainy season, because when we walk on the ground, we're gonna leave our tracks on the ground. So wear this backward. So when we use it and we move forward, it looks like we go backward. That's pretty cool. And so the more that they follow us this way, we're gonna be further to them this way. This one to distract them. Backward sandal. Yeah, the gun hole. So we're gonna shoot from here. So you can see that when we are outside and we look into it, you only see trees, maybe a dog hole. You didn't know what it is. But if you look closer, a bullet will come out right there. So and later, when we come inside the bunkers right here, you will see. From inside, if you look outside, it's very clear. Everything is clear to you. Where you stand, where you lie, how you run, just like that. But in ये वो होल्स हैं जो बाहर से दिख रहा था, जहाँ से ये गोली चलाते थे अगर कोई दिखता था तो। और अगर एक्चुअली में देखोगे तो बाहर आपको सब कुछ दिखेगा बहुत क्लियरली। और ये है यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन, टनल को एक्सपीरियंस करना खुद से। मैं आज जो टनल आपको दिखा रहा हूँ ये 120 मीटर के डिस्टेंस पे है और हर 20 मीटर पे एक एग्ज़िट पॉइंट है। उन लोगों के लिए इस तरह के डार्क लोकेशंस पसंद नहीं है, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके बाहर निकल पाएँ। एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट है ये। This is so tiring. और इन्होंने ऐसे रास्ता बना के रखा है हर 20 मीटर पे शायद। Need a break. Oh my god, my legs are. हाँ ये तीसरा Arrête de faire des commentaires. My whole face is like dripping and flat. एक और एग्जिट है। We're gonna race him. There's no chance. Crawling back. This is grueling, terrible. This bit's so smooth. Oh, Oh damn. my god, this bit's tiny. Yeah, you do have to cruise. Oh my god, I got cramp. Oh. I had to crawl that bit. Finished.
Are we going out? नॉट श्योर। तो अभी फाइनली कंप्लीट करके बाहर आ गया हूँ। 120 मीटर्स का टोटल जो लेंथ है वो है। हर 20 मीटर में आपको एक एग्ज़िट मिलेगा। तो हमने पूरा 120 कवर किया। बहुत से लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक लग सकता है, जिनको एस्थमा वगैरह है वो एस्थमा वाले लोग ना जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। बट ऐसे एज एन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड मेरे हिसाब से किया जा सकता है। उतना ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक तो नहीं लगता बिकॉज लाइट्स हैं अंदर में। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि टायरिंग है थोड़ा सा। डर नहीं लगेगा बट टायरिंग है, एफर्ट लगता है थोड़ा। तो अब निकल रहे हैं लास्ट। ये एक्चुअली लास्ट इवेंट रहता है इस ट्रिप का। तो उसके बाद यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। ये जो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे नेट लगा हुआ है एंड यहाँ पे एक बेड है। ये बेसिकली मेडिकल बंकर था। अगर किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो यहाँ आया करते थे। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो था कसावो एंड ये बेसिकली उसी को खाया करते थे एंड उसके साथ पीनट, सॉल्ट एंड शुगर का एक मिक्सचर जैसा कुछ बनाते थे। क्योंकि जो कसावो है उसमें खुद का कुछ टेस्ट नहीं होता है एंड इनके पास प्रोटीन के लिए कोई सोर्स ऐसा हुआ नहीं करता था परमानेंट। तो वो बस कार्ब्स खाते थे। कार्ब्स के लिए यही उनका मेजर सोर्स हुआ करता था। एंड उसके अलावा कभी अगर जो अमेरिकन्स डॉग लेके आया करते थे, जर्मन शेफर्ड, तो अगर उसको मारते थे तो फिर उसको खाते थे ये, या फिर वाइल्ड पिग अगर उनको मिल जाता था ऐसे फॉरेस्ट में तो उसको पका के खाया करते थे। एंड यही इनका प्राइमरी सोर्स हुआ करता था प्रोटीन का, और वो भी डेली नहीं मिलता था। जब मिल गया तो खा लिया, जब नहीं मिला तो फिर ऐसे ही इसी पे डिपेंडेंट रहना होता था। Okay, say one. This is a map of Ho Chi right here. The areas inside of the black line. This is Ho Chi district. And this is a map of Ho Chi in 1967 when they start their sit and fall operations. First thing they do, they mark 3 locations. One right here, one right here, and one right here. To make it into an iron triangle. Iron triangle. After the day that they form up this zone, no one could get in and no one from inside could get out. And we are now right here. Red triangle. Red triangle is for the VC base camp, Viet Cong base. Back then we have 3 villages that participate in Ho Chi. One right here, this is Ben Din village. This one is Ben Duk village, and this one Ben Suk village, our headquarters. And after the 7-4 operation, this village right here, our headquarters, it's been wiped out from the map by the tank and the bulldozer. So we only have 2 left, two villages left. And because we are here, so why this place is so crowded, so much tourists came here, because this place right here, this is the furthest that we can push the Americans out of Ho Chi. So right here we have a lot of big battles from here. That's why it's so crowded. And so the red area right here, this is the liberation area or the war zone. So the US, they only attack and bombing inside this area. Now the white area down here. White areas is the area that the US take control. They take control of this area to make a shield for Saigon. So you see, a shield to protect Saigon from our soldiers, from the communist soldiers. And because right here we have a highway. This brown line is Asian highway. So with this highway you can go through 3 countries. Vietnam, Laos and Cambodia, going up like this. So if they let the communist soldiers go through this border, it will be the end for them. So that is why they have to take control of this area. Nice. And right here we have our tunnel system right here. Like I said, 3 different levels. 3 meters, 3 to 6 meters, and 6 to 12 meters. At the first level, we have a lot of bunkers because the soil is still easy to dig up. So this one, first one, this is meeting bunker right here. Next one, kitchen. So this one is smokeless kitchen right here. Let's see how it works.
So when we build the store right here, we're gonna build 4 small bunkers under the ground. And we don't have the chimney that go up to the sky. Our chimney will be on the ground. And in the wall, we only cook 2 times a day. First in the early morning, second time in the afternoon. In the afternoon we cook. We're gonna close the chimney to store all the smoke inside the bunker. Yeah. And in the early morning, 4 to 5 a.m. in the morning, when we cook again, we're gonna open the chimney to let the smoke go out. But because it's in the early morning, so when the smoke go out, it's like a mist of the morning, a fog of the morning, so they won't see our smoke. And right here, resting bunker, storage. Last one, this is fighting bunkers right here. Fighting bunkers. You can see that some soldiers pointing the gun outside to shoot. So now, when they start bombing us, the first level is very easy to collapse. So we retreat to the second level. At the second level, we have this one, triangle bunker. And so this triangle bunker is different from this square bunker. So if when they drop the bomb, this one will collapse straight down. But this one, when it's collapsed down, the soil will spread into 2 sides. So we can survive inside. Next to it is a water well. So why do we have to build a water well when we have the river next to us? The river next to us. Why? Because going outside is kind of risky for us. Every time we go outside to take some waters is the time that we risk our life. And one more thing, as I mentioned to you, they were using the chemical Agent Orange. So when the people didn't know about that, they use the water from the river to drink, to cook. That's how they get effect. And so drink the water from here. It's also get a little bit of effect too, but it's safer because we take the water from inside, don't have to go out. And you know, the water's already being filtered by the soil. So it's safer to drink from here, to cook from here. And if they still can manage to get to the last tunnel right here, we will escape our way to the Saigon River, swim to another location, maybe swim back to our base, just like that. And you know, from the first Indochina War to the Vietnam War, in total, 27 years. In the first 9 years, in the Indochina War, only 25 kilometers. But until the end of the Vietnam War, 27 years. So that is how we have 250 kilometers of tunnel. Okay, and that is all about Ho Chi Tunnel.